Okay, so I'm live. Actually, I wasn't able to see if I'm live or not. Hi, Pushpak, hi. I still can't see on my phone if I'm live or not. Anyway, I hope I'm audible also. Okay, so good evening, good evening. How are you guys? And I hope you also saw the previous PYQ's lectures so that there's a better understanding for you about this whole situation. Okay, so PYQs के अलावा as you know we also discuss a chapter in very uh, not in detail, in very brief. So is there any particular chapter that you want me to discuss today, or should I pick one myself? And we'll not do it in a detailed way, but I'll obviously try to solve all of your doubts if you have any in a particular chapter. So just tell me which chapter do you want me to do. And we'll not do it. I am waiting for you to tell me which chapter. And then we'll do questions first from my response sheet as we did in the last lecture, and then we would do the chapter. स्पीड व्हाट? स्पीड का क्या प्रॉब्लम है? मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इफ यू थिंक दैट बहुत स्लो जा रहा है, बिकॉज अभी as I always wait 2-3 minutes after coming live to more people to join in. So abhi it's that time. Start in 1 or 2 minutes. Until then, you can tell me if there is any particular chapter that you want me to discuss today, as we did uh, biotechnology and biotechnology and its applications as well. Abdul, you're pretty much active right now, so बता दो कौन सा chapter you want me to discuss.
Because we'll start in 2 minutes. Or should I start right now? Acha, do you mean strategies wala chapter? In which there is the chapter which is deleted from your syllabus. Are you talking about that? हाँ ट्रिक्स तो है फॉर दिस चैप्टर। वैसे मैंने सोचा था ये थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। मतलब इन दिस चैप्टर यू जस्ट हैव टू बेसिकली रटना है तुमको ये चैप्टर। हाँ बट ट्रिक्स ऑफ कोर्स ट्रिक्स आई विल टेल यू। आई विल डिस्कस द ट्रिक्स विद यू। एनीवेज चलो लेट्स स्टार्ट, बहुत लेट हो चुका है। राइट सो बिफोर as a part of every initial session, I'll just introduce myself. I am Aarushi Anand and I'm from Hindu College and I'm currently doing BSc Honours Zoology, and I got 100 percentile in biology, psychology and English, and 99.8 in chemistry and around 99.8 only in physics. So there are two more things that ExamFactor is offering you other than the PYQs lecture that you are currently seeing. So it's the mock test series, and the reason you should do this mock test series is because you need practice. You need to solve more questions, and the more questions you solve, the more chances are there that you're gonna ace your CUET exam. The subjects that they are available for is accounts, BST, economics, maths, physics, chemistry, bio, history, geography, pol science, psychology, and English, and general test. General test ka mock test or crash course you should take if you are planning to do a general test, because generally you don't know the syllabus, or like you don't know how to go about that. And you can also tell your friends about the other subjects that they're there. And crash course में we have subjects जो आपकी स्क्रीन पे हैं, and the link for both crash course and mock test series, it's given in the description, so you can check out that. And if there is anything else that you want to know or you want to discuss, then you can feel free to tell me that as well. And with that, let's just start doing the questions. Okay. And wait, I will actually, we usually have to see कि live chat में क्या हो रहा है through our phones, and today I cannot see that on my phone because it's not showing that I'm live only. So I'll have to do that as well with laptop. So I am uh, I apologize beforehand only if there is something that I miss. ठीक है चलो तो let's start. Wait. Yes. Can you see my screen अच्छे से? नहीं ना, नहीं दिख रही। चलो छोड़ो, मैं हर क्वेश्चन के बाद दोबारा चैट खोल लूँगी।
Abhi, let's start. So these are some of the questions. This is my response sheet. As I've already told you कि this is how a response sheet looks. And questions क्या होते हैं, question ID क्या होती है, answers क्या होते हैं, and the option that we choose वो कैसे आता है, right? And we did a lot of questions. I think that we did till 40 maybe. हाँ, right. We did it till 39. Uh, like ribosome, histone, DNA polymerase, RNA polymerase, and the options list two had replication, transcription, translation, and nucleosome. Since it's a little tricky question and it's like match the following question, you guys, I would like you to solve this also once. Oh wait, you can see the answer. हटाओ इसे. Right. So I would like you guys to again solve this question because ये chapter बहुत important है. उसके बाद we'll continue हमारे questions and उसके बाद हम यही chapter कर लें क्या DNA वाला. DNA वाला would take around 2 days to complete like to uh, for it to get over. What are your thoughts? And what is the answer of this question? And look, it's like if you are there but you're not responding, then I'll feel that you are there and you're not responding. So I should give you a little more time, which will, I mean, if you're expecting कि सिर्फ answer discuss करके I'll tell you the answer, so that's not gonna work. ठीक है, मैं wait करूँगी and it'll take more of your time. So just answer दो and आगे बढ़ो if you're there. यार एक सेकेंड, लाइव चैट हो रही है क्या? मेरे को आज कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ओके, नाउ आई गेट इट ऑन माय फोन. मुझे प्रॉब्लम कब होगी अब इससे? ऑलराइट. सो आर यू गाइस सॉल्विंग दिस क्वेश्चन या फिर मैं आंसर बता ही दूँ?
खा के मुझे आंसर बताना पड़ता है, कोई आंसर ही नहीं देता। चलो, still giving you 30 seconds to answer this. Okay, all right, मैं बताती हूँ. Right. So we have ribosomes, we have histone, we have DNA polymerase, and we have RNA polymerase. So histone goes into what? Histone जाता है न्यूक्लियोसोम में, because histone के ऊपर ही DNA रैप करके न्यूक्लियोसोम बनाता है. Then DNA polymerase helps in replication of the DNA. RNA polymerase helps in transcription, um, which is DNA to RNA, right? So उसमें क्या लगेगा? RNA polymerase. जब RNA बन रहा है तो RNA polymerase लगेगा, right? Ribosomes helps in translation. तो translation is what? Translation is RNA to proteins, and जब भी proteins की बात आती है ribosomes अपने आप आ जाते हैं, right? So ये match the following है, इसका आंसर खुद ढूंढ लेना क्योंकि हमने कल ही मतलब पिछले क्लास में किया था. Anyway, now this is a good question. This is again true, क्या true है क्या true नहीं है वो वाला question, and these are the type of questions that you may know the answer for this, but you might, like, you again do it wrong, because these are a kind of the kind of questions जिसमें आपको, चलो 4 आंसर तो तुमने सही दिया है, ठीक है, मान लेते हैं, बट पहले भी दे सकते थे, मैंने मेरे बताने के बाद दिया. Anyway, um, statements are not true for allergy, right? So I'll read the statements for you and I'll give you 2 minutes or a minute, depending on how much time you jitni jaldi you answer. Right. So A says allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin. Right. B says allergens are the substances that cause allergy. C says the antibodies produced due to allergens are IgA type. ठीक है, and D says adrenaline and steroids quickly enhance the symptoms of allergy. Adrenaline and steroids quickly enhance the symptoms of allergy. Now, answer बताओ इसका. 1 पक्का? वैसे सही तो तुम कह रहे हो. 1 is correct because जब हमें एलर्जी होती है तो the allergens that is produced वो IgE टाइप के होते हैं, IgA टाइप के नहीं होते, तो C is obviously wrong, है ना. And allergy is due to the chemicals of histamine and serotonin, that is true, है ना. Allergens are the substance that causes an allergy, ये तो है ही true, है ना. And adrenaline and steroids quickly enhance the symptoms of allergy, नहीं, it's the opposite, right? Right? Clear है ना. मतलब आंसर सही दिया है तो क्लियर ही होगा, पर एक बार फिर भी बता दो, क्लियर है ना. चेक भी कर ले आंसर. अच्छा चलो, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही किया था अपने CUET के पेपर में, तो तुम्हें मेरे वर्बैटिम पर ही जाना पड़ेगा कि ये सही आंसर है. ए.
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो दिस इज अ केस स्टडी पैरासाइटिज्म की। मेरी स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी थी फॉर लास्ट एक सेकेंड। हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी लास्ट मंथ की ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करूँ। तो देखो, द थिंग इज़ कि जो चैप्टर हमने बोर्ड्स में किए होते हैं ना, उसकी रिवीजन हमको इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि याद होता है ना। एंड CUET इज़ एन MCQ टाइप एग्जाम। सो मुझे पर्सनली, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि उसमें मार्क्स लूज़ करने का वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन गलत किया, सॉरी, एक क्वेश्चन के आपको, हाँ, 5 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट? वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही क्या? देखो, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक सेकंड मैं खुद देखती हूँ। नहीं, वॉइस क्लियर है। एनीवे, मैं कह रही हूँ कि डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि मार्क्स लूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, बट दे आई पर्सनली फेल्ट कि ईज़ी होते हैं। तो ना लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा CUET मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। तो आप ना 1 कम से कम, आई बिलीव दैट यू आर गिविंग योर CUET एग्ज़ाम इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। Okay. Physics, chemistry, and biology. May you are giving your exam. So you give mock test of all three subjects, all physics, chemistry, and bio. का, ठीक है? It would take around. Do not, देखो, MCQs होता है तो इसको करना थोड़ा इजी होता है। फिजिक्स में शायद तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सॉल्व करना होता है। तो हाँ, फिजिक्स में तुम्हें फिजिक्स का पेपर भी मैं दिखा सकती हूँ तुमको। ये जो रिस्पॉन्स शीट मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की है। मेरा पेपर ऐसे ही हुआ था। मेरा पहला पेपर सबसे पहला बायो का था, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का था और उसके बाद फिजिक्स का था। तो एक साथ हुआ था। ठीक है, तो तुम भी एक साथ पेपर देने का ट्राई किया करो एक गो में। क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम बैठते हैं, हम पहले बायो किया, फिर ब्रेक ले लिया 10 मिनट, घूमने घूम घूमा घूम घूमते आए। ठीक है, उसके बाद वो फ्लो टूट जाता है। उसके बाद प्रेशर नहीं रहता। ठीक है, लेकिन CUET में बहुत प्रेशर होगा क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स एक ही साथ करने हैं। इनफैक्ट पहले मेरा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हुआ था, देन उसके 3-4 दिन बाद मेरा था इंग्लिश का पेपर, फिर साइकोलॉजी का पेपर, फिर जनरल टेस्ट का पेपर। सो मेरे 2 बार में हुए 3-3 पेपर्स। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ गिविंग 3 पेपर्स एट वंस एंड नॉट बी लाइक कि एक पेपर दे दिया तो ठीक है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द दिस क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, सो ये ना एक क्वेश्चन है पैरासाइटिज्म का, एंड ये ना हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो डिड यू सी द प्रीवियस लेक्चर्स एंड डिड यू डू दिस एज वेल? और या मतलब क्या मैं इसे स्किप कर दूं या फिर यू वांट मी टू डिस्कस दिस? अच्छा, फिजिक्स का मैं दिखाती हूँ नीचे, मैं नीचे करके दिखा दूंगी। देखो, पूरे प्योर प्रॉपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते जैसे बोर्ड्स में आते हैं ना। बोर्ड्स में क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, CUET में आते हैं तो आपको मेनली आंसर देना होता है, तो इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आए। बट लेकिन पता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इजी होते हैं। फिजिक्स की जब थ्योरी आने लगी ना, तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। और फिजिक्स की थ्योरी ही आई थी और पेपर डिफिकल्ट था। फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था। बायो का पेपर कुछ भी नहीं था। बायो का पेपर वाज लाइक, सोते सोते भी दोगे ना तो इजी पेपर था, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल। ठीक है, बट फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था। ठीक है, चलो, तो मुझे बस ये बता दो कि ये वाला जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये करना है या फिर कर लिया? हाँ, बायो का पेपर तो हलवा ही था, बहुत इजी था बायो का पेपर।
तो तुम देख ही सकते हो, ये पेपर जो तुम्हारे सामने है वो बायो का ही तो है और पिछले साल का ही है, मेरा ही है। तो है तो इजी। अगर मैं बिना कुछ पढ़े, मतलब मैंने 12th की बायो तो बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है ना, और zoology में भी हम ये सब नहीं पढ़ते एग्जैक्टली। तो उसके बाद अगर इफ आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग और रिवाइजिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इजी आर दे। मतलब वो बात अलग है कि मैंने उस टाइम पे इतना अच्छा पढ़ा था कि मुझे अभी तक याद है, बट स्टिल मतलब तुम्हें ऐसा नहीं सोचना कि बहुत इजी आएगा तो कुछ भी पढ़ के ना जाओ। तुम ये सोच सकते हो कि इतना मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ ये भी मत सोचो कि तुम हलवा पेपर आएगा कुछ नहीं पढ़ के जाते, ये सब मत सोचना। मुश्किल भी आ सकता है पेपर। पिछले साल सिर्फ एक साल हुआ था सीयूईटी और हमको कोई आइडिया नहीं था कैसे करना है। इस साल इस साल रिसोर्सेज बहुत बढ़ चुके हैं सीयूईटी के। चलो बता दो ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना, या फिर चलो डिस्कस कर ही लेते हैं अब, है ना। जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, so read the given paragraph and answer the given questions. It says parasitism has evolved in many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Many parasites have evolved to be host specific in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. In accordance with their lifestyles, parasite evolves special adaptations and complex life cycles. Complex life cycles of parasites mean it says one, having only one intermediate host, two, having special adaptations to cling on to the host, and three, having, okay, skip, many hosts, and four, having one or two intermediate hosts to facilitate parasitization ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। तो इसका आंसर फोर है, बता देती हूँ। अब पढ़ लिया है तो, मैंने भी नहीं याद था क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था मुझे, बट फोर है, समझ लो। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब स्पेशल अडेप्टेशन टू क्लिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। हैविंग many hosts does not really explain things. Having one intermediate host, that's not complexity. So four is the complexity. ठीक है, parasites harm the host by reducing its size, reducing its survival, आंसर थ्री है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बुक में भी दिया है, एंड और क्या ही होगा, है ना। एंड ये बी इजी है, ब्रूट पैरासाइटिज्म है पहला वाला, एंड सो लाइक फर्स्ट इज थ्री, देन बी इज ectoparacyte, wait, C is endoparasites, and हाँ तो the answer is B is ectoparasites. Answer is two. The answer is two, right? The answer is two. Um, इसका आंसर भी करेक्ट बताना ना। इसका आंसर आई थिंक थ्री है, बी एंड डी करेक्ट, नॉट ट्रू है, सॉरी। ये भी इजी है, ये हमने किया हुआ है। चलो अब ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं किया। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। मैंने आंसर नहीं किया, एक बार ये फ्लो चार्ट देख लो, क्वेश्चन नीचे है। दिस इज द फ्लो चार्ट, लुक एट इट। ठीक है, और मुझे बताओ ये क्या है, मतलब ये डायग्राम किसका है, पहले तो मुझे बताओ किस साइकिल का है। आई मीन इट्स काइंड ऑफ गिवन एंड रिटन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, बट स्टिल। ये तुम्हें आता है, पहले ये बताओ तुम्हें आता है, तुमने कभी देखा है ये क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन की लाइफ होती है जो हम लाइफ साइकिल ऑफ कार्बन बोले उस चीज को, आई मीन हाँ कार्बन साइकिल है, यू राइट, बट चलो फिर, तुम्हें पता है कि ये क्या है, मुझे लगा नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये डिलीटेड चैप्टर में से है। तो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट
अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ कार्बन। एंड इसका मैं आधा दिखाने की कोशिश करती हूँ, फ्लो चार्ट, सो दैट, रुको, हाँ, अब बताओ। Tell fast. Which of the following does not constitute the underground store for carbon? अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ कार्बन में किसमें नहीं होता? क्या कोल में कार्बन होता है? होता है कोल में कार्बन, राइट? है, ये तो गिवन है, मतलब बताओ, डायग्राम में इतनी सारी चीजें हैं, इसमें पूछा कि which of the following does not constitute अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ कार्बन, तो बस ऑयल और गैस होती है नीचे, है ना? ऑयल और गैस में आंसर क्या होगा? CO2 होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ कार्बन की हमारी बात हो रही है। So now the question changes. The question is, which of the following activities decrease the amount of CO2 in atmosphere? Very easy question.
Come on, guys, answer दे दो. ओके एनीवे चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस है बिकॉज रेस्पिरेशन तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगा सेम विद बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स so this is a very given thing. Now the other question is which of the following is another name given to nutrient cycling, and this is a very easy thing. Next question on your screens. Which of the following is another name given to nutrient cycle? 1. Biological cycle, 2. Biogeological cycle, 3. Biogeochemical cycle, and 4. Biochemical cycle. आज ये पेपर खत्म हो जाएगा चलो. Then कल से next paper we'll do. Okay, so the answer for this is biogeochemical cycle, right? Another that's the another name given to nutrient cycle. Why? Because it involves all three components. Bio is the biological component, geo is the component जो कि हमारा पूरा atmosphere biosphere से move कर रहा है, and chemical is the thing that's moving. Like for carbon, carbon is a chemical, chemical chemistry वाला part. So it has all three parts, so it is called as biogeochemical cycle, right? Now, another question is the amount of carbon dioxide in atmosphere. Wait, shit. Okay. So it says the amount of carbon dioxide in the atmosphere is regulated by which of the following? 1. Plants, 2. Animals, 3. Oceanic reservoir of carbon, and 4. Burning of fossil fuels. So इसका answer is 3. Oceanic reservoir of carbon. That oceanic reservoir of carbon regulates the carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है. Now last question. The amount of nutrients such as carbon, etc., present in soil at any specific time is referred to as, it says 1. Standing rate, 2. Standing state, 3. Nutrient rate, and 4. Nutrient value.
हाय पुष्पक, तुम पहले भी तो थे, व्हाई डिड यू लीव? चलो ये बता दो, आज चैप्टर कौन सा करेंगे? मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आज कौन सा चैप्टर करना चाहिए. वी हैव ऑलरेडी डन द बायोटेक वाला यूनिट. नाउ let's do the microbes wala unit now. Since you guys are not telling, so I'm gonna pick a unit myself. And human diseases wala आज हम करेंगे, but we'll do जल्दी जल्दी. So या फिर एक काम करते हैं आज, चलो वही करते हैं, डिजीजेस वाला चैप्टर. ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ. इसका आंसर न्यूट्रिएंट रेट है. ठीक है, सॉरी सॉरी, न्यूट्रिएंट रेट नहीं है, स्टैंडिंग स्टेट. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. द आंसर फॉर दिस इज स्टैंडिंग स्टेट, सेकंड ऑप्शन. ठीक है. नाउ सिंस दिस इज डन, देख लो एक बार केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इफ यू लाइक टू सी. So it says T99% with respect to T90% for a first order reaction is 4 times of 50%, 1.5 time, it is same or double. So ऐसे questions can come. This is chemical kinetics का है ना, and this is also sulfur. So this is P block elements. तुम्हें तुम्हारे बुक में शायद कट गया है. देन ऑब्वियसली द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टाइप, ये वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल लिख कर ले लो, आएंगे ही. ठीक है. मॉलिक्यूल्स हमारा जो है, ये क्या कहते हैं, सॉलिड्स का, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. देन मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ऑल्दो आई कैन डू दैट, बट मैं नहीं करवा रही हूँ. सो बट आई एम स्टिल letting you see the paper how it comes. So these kind of questions came in the chem exam. This is again D block. D block में तो for every type of question you're gonna have one answer. Electronic configuration से related या फिर stability of half filled and fully filled orbitals. Now this is which of the following alkyl halides organic chemistry. This is chemistry from everyday life, and this is very easy. This is a what? This is an analgesic. This is what? Aspirin. Then this is आपका सेकेंड चैप्टर है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है. थर्ड चैप्टर सॉरी, वैंटॉफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस हैं. दिस इज अ वेरी फन पेपर है, देखकर मुझे केमिस्ट्री याद आ गई 12th की. So these are the kind of questions that came in chemistry का exam. And as अब्दुल सेट की फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं या थ्योरी, तो मैं एक बार फिजिक्स का पेपर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को. फिजिक्स का पेपर टफ था. ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस थे. ये आपका मैग्नेटाइजेशन पे क्वेश्चन है, एच एन आई वाले क्वेश्चन, एम वाले, बी वाले क्वेश्चन, एम बी जिसमें होता है. ठीक है, ये देन आपके बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं. न्यूमेरिकल आई थिंक एक दो ही आया होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं था. इट वाज लाइक 500 यूनिट दे दिया तो 10 समथिंग दे दिया, तो 10 500 कट गया, 50 आंसर आ गया. ऐसे वाले क्वेश्चंस थे जो जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी बेसिकली, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मुश्किल हो जा रहा था पेपर. ठीक है, ये देखो आपको ये ऐसे क्वेश्चन है. लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये यूनिट्स वाले क्वेश्चंस बहुत हैं, तो वो याद करके जाना. वो एमएलटी वाला जो होता है, डायमेंशंस, वो याद करके जाना. देन ऐसे क्वेश्चंस बहुत थे, मतलब
जैसे एक ट्रांसफॉर्मर कैन प्रोड्यूस एसी पावर्स, इन करेक्ट करेक्ट ऑप्शंस तो वैसे भी बहुत आते हैं, है ना। सो देन कैपेसिटी, अर्थ की कैपेसिटी पूछी हुई थी, ये तो सिर्फ रट के ही जानी होती है। देन एसआई यूनिट्स पूछे थे, डायमेंशंस पूछे थे, ये यूनिट्स पूछे थे कि फॉर्मूला क्या होता है काइंड ऑफ, ठीक है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, तो एज आई सेड ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत थे, ठीक है। थ्योरेटिकल ग्राफ एकदम, जितनी थ्योरी है ना, मतलब जितनी थ्योरी थी उससे बहुत अच्छे से थ्योरी से दबा के क्वेश्चंस पूछे थे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो दिस वाज इट, ठीक है। नाउ यू सीन इट, अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, बायो पे वापस आ जाते हैं। लेट्स मूव आवर फोकस टू बायोलॉजी अगेन। मैं तब तक ज़रा आपके लिए खोलती हूँ पेपर, आई मीन यस। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने हमेशा बोला कि एक बार इसकी स्टार्टिंग भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए ना। हाँ, तो हम एम एस स्वामीनाथन की पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे। In the School of Cytogenetics and Radiation Research established at Indian Agriculture Research Institute (IARI) enabled Swaminathan and his team to develop short-term, high-yielding varieties of rice, including scented basmati. He is also known for the development of the concept of crop cafeteria, crop scheduling, and genetically improving the yield and quality. Swaminathan initiated collaboration with Norman Borlaug, which culminated in the Green Revolution through introduction of the Mexican varieties of wheat in India. This was highly recognized and appreciated. He is also the initiator of Lab to Land, Food Security, and several other environmental programs. He has been honored with Padma Bhushan and several other prestigious awards, medals, and fellowships by institutions of excellence. Alright, नाउ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब हम इतना तो नहीं पढ़ेंगे इसको, बट हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लेंगे। तो अगर हम बात करें कि बॉडी टेम्परेचर से मतलब एक यू नो बॉडी टेम्परेचर से थर्मोमीटर को बॉडी सॉरी थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर नाप के जो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस थी वो किसने डिसअप्रूव की थी, तो इट वाज विलियम हार्वी, ठीक है। अब नाउ क्यों होते हैं डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द टर्म हेल्थ, व्हाट डज हेल्थ मीन? हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। देन व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है दैट इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। एंड इसमें लिखा है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड दैट इंक्रीजेज लॉन्जेविटी ऑफ द पीपल, है ना। एंड बैलेंस डाइट इज इम्पॉर्टेंट, योगा इज इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, इम्यूनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ डिजीज़ की हमारी दो कैटेगरीज होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेडली डिजीज़ क्या है हमारे पास? एड्स, है ना, एड्स है ना। एंड नॉन इन्फेक्शियस की क्या है? कैंसर, राइट। So now what is a pathogen? Pathogen is something that causes a disease, right? So it could be anything, है ना। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सैल्मोनेला टाइफी। तो इसमें ना आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि ना एक टेबल बना लो, ठीक है। एक टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो डिजीज का नाम, यहाँ पे लिखो पैथोजन का नाम, ठीक है। यार एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो पैथोजन का नाम, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो कि वो क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, प्लस क्या कह रही थी मैं, पैरासाइट है, क्या है, कैसे कैसे एक्ट करता है, ठीक है। या वर्म है, आई मीन
the two worms diseases that we have. तो यहाँ पे वो लिखो, लेट्स से दैट्स एक्स. ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सिम्टम्स लिखो. ठीक है, सिम्टम्स. एंड इधर एक और कॉलम बना लो, एंड यहाँ पे यू राइट मिसलेनियस थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल इन टाइफाइड इट्स गोना बी विडाल टेस्ट. ठीक है ना. तो ये क्या कहते हैं, ये जो चार चीज़ें हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाली चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मिसलेनियस किसी का होगा, किसी का नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है सिम्टम. देखो पैथोजन एंटर कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. सिम्टम है हमारा सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite. These are the some common symptoms. And उसके बाद severe cases में we have intestinal perforation, death में आकर. ठीक है. Now Vidal test, as I said, and the famous case of Mary Malone, which is like she's also known as typhoid Mary, right? So now we have bacteria again, which is Streptococcus pneumoniae and hemophilus influenza. क्या कराता है ये, निमोनिया कराता है. इसमें क्या होता है, एल्वेलाई सैक्स जो होती है हमारी लंग्स की इन्फेक्ट होती है ना. एंड सिवियर प्रॉब्लम्स होती है रेस्पिरेशन में. इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, चिल, कफ. सिवियर केसेस में नेल्स और फिंगर्स का कलर ब्लूइश हो जाता है बिकॉज ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है ना. एंड हमारे पास और भी क्या क्या बैक्टीरियल डिजीजेज है, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया. ये नोट कर लो, ये आ सकता है कि बाकी डिजीजेस क्या है. तुम्हें क्या लगा, तुमने जो डिजीजेस कर लिए उसके एग्जाम्पल सिम्टम्स दिया वही आएगा, इंपॉर्टेंट है नहीं. ठीक है, मेरे पास कॉमन कोल्ड है जो कौन कराता है, राइनो वायरसेस है ना. कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कंजेशन, नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, होर्सनेस, विच यूजुअली लास्ट 3 to 7 days है ना. कैसे होती है, वायरस है तो इन्फेक्शियस है, मतलब इनफैक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल जाती है. और इसमें क्या है मेन चीज, दैट इट ओनली infect the nose and respiratory passage and not the lungs. So upper part of the respiratory tract. Now we come to the most detailed disease जो दी हुई है, which is malaria. ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज. इसके 4 टाइप होते हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स, मलेरिया, फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल. यार वैसे तो पता है और भी होते हैं, ठीक है, पर तुम्हारे को बुक में दिए हुए नहीं है तो रुक जाओ, आई कैन जस्ट राइट. हाँ, सो और क्या होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल. ठीक है, इट माइट कम सो यू कैन नोट इफ यू वांट. देन सबसे मैलिग्नेंट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. तो प्लाज्मोडियम की वो क्या होती है लाइफ साइकिल. सो इट एंटर्स आवर ह्यूमन बॉडी जब कोई मच्छर मतलब फीमेल एनोफिलीज काटती है, स्पोरोजोइट विच इज द इन्फेक्शियस फॉर्म. ठीक है, उसके बाद दे इनिशियली दे गो टू लिवर एंड दे मल्टीप्लाई. ठीक है, एंड देन उसके बाद लिवर के सेल्स को रप्चर करके दे मूव टू आरबीसीज. आरबीसीज में फिर देन अगेन उसे रप्चर करते हैं. इसे रप्चर करते तो हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स. ठीक है, फिर उसके बाद कोई इन्फेक्शंस पर्सन का ब्लड में जाएगा तो उसमें क्या होता है हमारा, अगेन हमारा वो when a female anopheles bites an infected person then parasites enter the mosquito's body and undergo further development. तो हमारे ब्लड में क्या होता है ना, जब आरबीसी से रप्चर होता है तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ, सॉरी डायग्राम में दिया हुआ है कि गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, याद रखना गेमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ये गेमेटोसाइट्स जाते हैं और ये जो गट होता है ना, गट ऑफ द मस्कीटो, राइट, इसमें लिखा भी है. ठीक है, गट में फर्टिलाइजेशन होती है. अरे गट में तुम्हारी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वो बन जाते हैं स्पोरोजोइड जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के पास जहाँ पे वो स्टोर होते हैं. देन उसके बाद अगेन द सेम साइकिल रिपीट्स. ठीक है ना. नाउ वी कम टू एंटामीबा हिस्टोलिटिका विच कॉजेज अमीबियासिस. अरे क्या कर सकते. ठीक है, इसकी डिजीजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन,
Abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots, and houseflies can act as a uh, mechanical vector for this carrier. Sorry. नाउ एस्कैरिस एस्कैरिस क्या कराता है स्कैरियासिस ठीक है एग्स जो होते हैं पैरासाइट्स के वो इन्फेक्टेड फीकस के साथ हम अपने कंटामिनेटेड फूड के साथ खा सकते हैं उसकी वजह से हमें स्कैरिस होता है जिसके सिम्टम्स होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन फीवर एंड अनीमिया नाउ वी हैव विशेर्शिया बॉनक्रॉफ्टी एंड मलाई विच इज़ द फिलारियल फॉर्म इसलिए हमें क्या कराती है एलिफेंटियासिस एंड फिलियारिसिस सो दिस इज द डायग्राम दैट इज गिवन फॉर एलिफेंटियासिस उसमें क्या होता है हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स होते हैं दे लाइक इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ठीक है एंड फीमेल वेक्टर्स मस्किटोज अगेन एक्ट्स एज अ कैरियर टू दिस सो अगर मैं पूछूं कि विच आर द टू डिजीजेस जो फीमेल मस्किटो से होती है तो व्हाट इज योर आंसर योर फर्स्ट आंसर वुड बी मलेरिया एंड सेकंड आंसर वुड बी एलिफेंटियासिस और फिलियारिसिस राइट आई मीन जो बुक में दिया हुआ है ऑब्वियसली उनसे तो बहुत सारी डिजीजेस होती है ना so then we have microsporum, trichophyton and epidermophyton. Ringworms होती हैं जो कि सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ringworms and what is this fungus species. मेरे पास इसकी शायद ट्रिक होगी मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे याद करना है इसको या फिर हो सकता है वो ट्रिक ना दूसरी बुक में हो क्योंकि मैंने एक्चुअली बुक चेंज की थी हाँ, वो इस बुक में नहीं I mean, I lost my book once, so I bought a new book, and then I got my old book back as well. So अभी मेरे पास मेरी पुरानी बुक है और नई बुक में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं ना वो याद दिलाना इफ़ यू वांट दीज टिप्स एंड ट्रिक्स सो यू कैन टेल मी स्पेसिफिकली फॉर विच चैप्टर और विच पैराग्राफ इफ यू नीड अगर मैंने नई भी बनाई होगी देन ऑल्सो आई मेक वन एंड टेल ठीक है So this is ringworms. What are these? Lesions accompanied by intense itching, heat and moisture help the fungus to grow. ठीक है and this is maintenance of personal hygiene is very important. इसमें सारे basic points हैं इसमें एक बहुत important point है Gambusia का ठीक है which eats the larva of the mosquito and it helps in reducing the waterborne diseases that is caused by mosquitoes ठीक है चलो फिर हमारा इम्यूनिटी तक करते हैं टुडे लेट्स डू इट टिल इम्यूनिटी मे बी ठीक है इम्यून सिस्टम यार ये तो बहुत बड़ा है अच्छा चलो इम्यूनिटी तक करा देती हूँ फिर उसके बाद एड्स देन आई थिंक इट्स कैंसर देन इट्स ड्रग अब्यूज दिस वी कैन डू टुमारो विड्रॉल सिम्टम्स एंड ऑल दिस इज़ वेरी इजी ये तो कराने की ज़रूरत ही नहीं है इम्यूनिटी के चलो आधा आधा कराते हैं टाइम बहुत हो गया 9:15 हो गए Right. So there are two types of immunity, innate immunity and acquired immunity. अब innate immunity क्या होता है? Innate immunity is something that we get from our parents, get as children, get as an infant. Acquired immunity is something which we acquired throughout our lifetimes. Like for example, हमें COVID हुआ, COVID के बाद हमारे पास antibodies थी. That is then becomes acquired immunity. ठीक है? So, innate immunity maybe we have four types of immunity. We have physical barriers, oh sorry, four types of barriers. Physical barriers like skin on our body, physiological barriers like acid in stomach and saliva in mouth and all these physiological things. And then we have cellular barriers like जो हमारे पास certain cells होते हैं like WBCs होते हैं जो fight करते हैं या फिर PMNL neutrophils होते हैं that those and natural killer type cells lymphocytes के वो होते हैं macrophages very important जो phagocytosis करते हैं destroy करते हैं microbes को and then we have cytokine barriers which is interferons is what interferons are virus affected cells which produces interference is basically a protein which is produced by virus infected cells ताकि जो non infected cells हैं वो protect हो सके right so this is the acquired immunity कि हमारे पास क्या होता है so this is the structure of an antibody molecule
There are two light chains and two heavy chains. These are the two light chains and these are the two heavy chains. ठीक है. So this is an antigen binding site sorry, antigen binding site, and यहाँ पे आके क्या antigen bind करता है which is specific to every मतलब antibody is specific to every antigen. ठीक है. तो हमारा सॉरी हमारा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है. देन सेकेंड टाइम जब वो आता है तो हम हाई इंटेंसिटी से उसको रिएक्ट करते हैं, राइट. सो we have B lymphocytes and T lymphocytes in our body. तो B lymphocytes directly are not involved in fighting. तो B lymphocytes क्या करते हैं? B lymphocytes produce an army of proteins in response to the pathogen into our blood to fight them. ठीक है, these proteins are called antibodies. So हाँ तो ठीक है, B cells क्या करते हैं? फाइट नहीं करते, राइट. टी सेल्स ऑल्सो फाइट नहीं करते. एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स. ठीक है, एंड टी सेल्स हेल्प्स देम टू डू इट. देयर आर टू पेप्टाइड चेन सॉरी 4 पेप्टाइड्स चेन, 2 स्मॉल एंड 2 हैवी, है ना. तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं H2L2. देर आर लाइक जो हमारे बुक में एंटीबॉडीज दी हुई हैं वो 4 टाइप्स की हैं, IgA, IgM, IgE एंड IgG. ठीक है, इसका एक एक रिस्पॉन्स तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब एक एक फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि IgE कहाँ लगता है, IgG कहाँ लगता है, IgM कहाँ लगता है, IgA कहाँ लगता है. ठीक है, तो IgM में पता है एलर्जी में लगता है, मैं आज डिस्कस किया. IgA, IgM और IgG बताना कि कैसे कहाँ लगता है. ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज एज वेल, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है. सो सेल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है एंड व्हेन वी रिजेक्ट आउटर के सेल्स, मतलब बाकी सेल्स जो हमें मिले हैं, ठीक है, दैट इज डन बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और उसका मीडिएट कौन करता है? टी लिम्फोसाइट्स. तो बस इतना याद करो, ट्रांसप्लांटेशन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड CMI, टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. एंड फॉर दिस वी नीड इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं हमको, ताकि we can adapt to that new organ of that transplantation that has happened. ठीक है, so now this is active and passive immunity, this we'll do later. ठीक है, हम ये कल करेंगे पूरा चैप्टर, बिकॉज अभी बहुत लेट हो गया है. ठीक है, we'll continue tomorrow. So I'll just wrap up and thank you so much for being here, and this marks the end of the session, and we'll meet tomorrow with new set of questions and new set of topic you already know what we'll discuss. So yeah, that's it. Very very thank you to all of you present here. So मैं slide पे भी दिखा देती हूँ. Thank you. Okay, chalo, now I'll be ending the stream. I hope to see you guys again tomorrow at the same time.